Hello and welcome. My name is Zaffar Iqbal and you are watching the Mojo Story. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has triggered a debate. In a media briefing, he said that besides the image of Mahatma Gandhi, there should also be image of Hindu deities, Goddess Laxmi and Lord Ganesh, on the currency uh, for blessings to better the economy of the country. Now, it has evoked sharp reactions from the opposition parties, from other parties. BJP has hit back and terming Arvind Kejriwal's suggestion as vote bank politics ahead of assembly elections in Gujarat. Congress leader Salman Soz has also said that there should be, in fact, image of other, people belonging to other religions as well. But uh, this has this has clearly set uh, a debate in the country. To discuss this, we are joined by an eminent panel. We joined by uh, we were joined by Sayantan Ghosh, who's a research scholar. We're also joined by Aam Aadmi Party spokesperson Ghanendra Bardawaj, and we are also joined by Gargi Nandi Roy, who's a political commentator. If I can start with the Aam Aadmi Party spokesperson, uh, आज जो केजरीवाल जी ने बयान दिया, क्यों दिया उन्होंने? आज कुछ लोगों का कहना है कि ये जो आने वाले चुनाव है गुजरात में, हिमाचल में, उसको मद्देनजर रखकर ये बयान दिया गया है। क्या कहना आपका? जफर जी, कुछ लोगों को हर चीज में राजनीति नजर आती है और कोई लोग मतलब इस देश में देखिए इस तरीके के लोग हैं जो हर चीज को पॉलिटिकल एंगल से, पॉलिटिकल चीजों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। निश्चित तौर पर अगर अरविंद केजरीवाल जी की जिसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, अरविंद केजरीवाल जी ने साफ साफ कहा है कि देश को नंबर 1 बनाना है। और आज से नहीं कह रहे, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो कोर हमारा जो एजेंडा है, जो हमारे कोर इश्यूज है, वो यही है कि देश को नंबर 1 बनाना है, देश में अच्छे स्कूल बनाने हैं, देश में गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी है, ये हमारा प्राइम एजेंडा है। देश में हर आदमी को अच्छा इलाज मिले, मुफ्त इलाज मिले, ये अरविंद केजरीवाल जी का एजेंडा है। देश में हर महिला की सुरक्षा हो, उसका सम्मान हो, ये अरविंद केजरीवाल जी का एजेंडा है। देश के नौजवानों के हाथ में रोजगार हो, देश के किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिले, ये हमारा एजेंडा, ये हमारे कोर काम है जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, आज इसे दिल्ली उन चीजों की बात क्यों नहीं हुई, बल्कि ये बात की उन्होंने? देखिए उन चीजों पे फोकस होना चाहिए। मैं वही जफर जी, मैं पूरा आपको कंटेक्स्ट बता रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, आम आदमी पार्टी का जो गवर्नेंस मॉडल है उसमें ये सब चीजें हैं। और इसीलिए दिल्ली के लोगों ने एक बार नहीं 3-3 बार अरविंद केजरीवाल को बहुत भारी मैंडेट से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। और निश्चित तौर पर हम गुजरात के उसके बाद हम पंजाब के लोगों ने अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को एक्सेप्ट करा, अडॉप्ट करा। गुजरात भी कह रहा है, हिमाचल भी कह रहा है, पूरा देश भी कह रहा है। जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, निश्चित तौर पर 130 करोड़ भारतीय, उसमें मैं हूं, उसमें आप है, वो कोई भी रिलीजियन का हो, कोई किसी कम्युनिटी का हो, किसी कास्ट का हो, मुझे नहीं लग रहा कि किसी को भी लक्ष्मी और गणेश जी के आराध्य से को कोई अस्वीकार करता हो। कोई भी है, किसी भी रिलीजन का, उसके घर में कोई शुभ काम शुरू होता है, कोई नया व्यापार शुरू करता है, कोई बिजनेस शुरू करता है, वो लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करता है, उसकी स्थापना करता है और उनका आशीर्वाद लेके अपना आगे का कार्यक्रम शुरू करता है। और अरविंद जी ने भी इसी कंटेक्स्ट में कहा है कि लक्ष्मी और गणेश जी का अगर करेंसी पे आएगी, आज भी इस करेंसी को जो भी हमारे ट्रेडिशनल जो सिस्टम है और जो हमारा जो आदान प्रदान है पैसों का लेन देन का, हम ऐसे ही कहते हैं कि लक्ष्मी घर पे आई है। कोई आदमी घर पे अगर पैसे लेके आता है, सैलरी लेके आता है, कहीं से भी प्रॉफिट लेके आता है, वो कहता है लक्ष्मी जी लेके आए। अब सिर्फ लक्ष्मी जी को उन्होंने कहा कि लक्ष्मी और गणेश जी को करेंसी पर अगर रहेंगी तो निश्चित तौर पर सबके लिए ठीक रहेगा। आपने अपनी बात रखी। लेट्स टेक इट टू our other panelists. Gargi Nandi Roy, what is the problem if what Arvind Kejriwal has said, uh, having some more image added to currency notes, deities, Goddess Lakshmi, and Lord Ganesh? No, there is no problem. But the problem is that Arvind Kejriwal, whatever he does for sheer politics. He understands it very well. And he is understanding, that the opposition has been accusing him for minority appeasement.
because he has been accused because of the Rohingyas that he has sheltered, because of the ban on cracker. They are saying that he's against the Hindu gods. So Arvind Kejriwal, he's like a chameleon. He changes color. So he wears a skull cap. He will go to a iftar party when he thinks that the Muslim voters are important. Now suddenly he's feeling that he's going to Gujarat, he's going to Himachal, and now there is so much of corruption. His party members are tainted by corruption. There is the likes of Amanatullah Khan. Tahir Hussain has been charge sheeted for Delhi riots. He is the person who was sympathetic to Batla House terrorists also. He has been accused so much of minority appeasement and love for minority. He is seeing the Hindu voters who are sitting on the fence to target them. See, there are Hindu voters in Gujarat also. There are very strong BJP voters. They will not come to AAP. So whom is he targeting? The fence sitters, Hindu, and those who are against BJP are not sure. So he will cut on Congress's votes. To be very clear, No, basically but Congress but votes but and the the fence point is, sitters, Hindus. but the point He is is that there doing is it no problem in absolutely what for the vote. he's a politician, and Hmm. he is trying. He will contest elections, and he will play all the So cards to why win bring the election. Yeah. See, these are the people who are champions of secularism otherwise, but they will bring religion, use religion to garner votes. That is the problem. Same, there's so much similarity with Mamta Banerjee. You can just draw an analogy with Mamta Banerjee, what she had done, giving Imam Bhata, the doles to Imam, stopping Visarjan of Durga Puja immersion because of Muharram. And now, then when she is feeling that, okay, people are saying that she's against the Hindus, because in her votes also 48%, 30% were Muslim votes. So what she's doing, she's going and chanting Chandi mantra, which she's chanting wrong. Then suddenly, she's giving donations of 60,000 to Durga Okay. Puja organizing clubs, which was not Okay. required because the clubs are Right. rich. So why do Right. you do that? Do the Right. Sabka Saath, You. Sabka Vikas. Yes. Talk about don't talk about Yes. secularism and then change color like a chameleon Okay. just to gain the So so votes. so Whether it so is Hindu they votes, are whether it is making a Muslim votes. U-turn. They're making a U-turn. BJP is No, no, also. no. Uh, I s- think Arvind Kejriwal Zafarji is a very good stunt man. He's a very good okay. stunt person. Very Okay. good political stunt person. Santan Ghosh, well, elections in Gujarat, elections in Himachal Pradesh, is there any doubt that the statement war has been made with an eye on those elections? Uh, hi. So, what I will say that, of course. So, the problem with if we see the Kejriwal model of politics, right? So, it's right now his main target is Gujarat. Okay, because in Himachal we are not seeing that much of noise. And Right. after enforcement directorate arrested Mr. Satinder Jain, who was the Gujarat, who was the Himachal in charge, the entire campaign has gone down a bit. We are not. So now in Gujarat, I think that why this suddenly this thing came. I think there are certain points. Number one, that the Gujarat has around 15% of tribal population. And Aam Aadmi Party was the first political party which started its Gujarat campaign with uh, aligning with the Bharatiya tribal party. But now this alliance is not there. Their target was the that tribal vote bank, but that did not work well. And secondly, see that then the thing, then he was talking to the Dalit population. He invited a Dalit man in Delhi. This part also happened, but then the whole entire controversy of conversion row came. So he understands that this Dalit So vote bank will not work. Uh, yeah. yes, yes, He said so because, of course, as I was saying, that he's a politician. right. He has an eye on the upcoming election. But the point that I'm trying to ask is that, if there is a Kejriwal model of governance, his mohalla clinics, his education reforms that he's brought about, why he has not emphasized on those things rather than raising these issues, and also who is talking about real economic issues that are confronting the country. The rupee is falling compared to dollars, foreign exchange reserves are coming down,
there's price rise. Who's talking about those? Has all of this reduced to such statements only, which can perhaps help the, the politicians and parties to win some votes, but they're not focusing on real issues? So I think there is no doubt about it, looking in Yeah, today's how the things are happening. But also, sir, I think it is important for us to see that today, around the same time, two events happened. At 11 o'clock, he said that he will address the press conference, Mr. Kejriwal tweeted. yeah, And at the same time, Mr. Kharge took charge of the Congress party president. right, right. The Yeah, yes. press conferences, if we see that the press conferences happened ek saath, kind of. Yeah, Okay. yeah, yeah, yeah. So it's about making the political discourse. Who is what we are debating, what we are discussing today is Arvind Kejriwal's statement, right? Hmm. It's gaining the political momentum, creating the political discourse. He knows very well, sir, that his request to Mr. Modi to make changes in which also comes, which is a very big thing to change Indian currency. It cannot happen just चिट्ठी लिख दिया हो गया, ठीक है? So it Okay. will never Yes. happen. Yes, So so that's an interesting yeah, point, that the timing at the same time when there was a event happening as far as Congress is concerned, this press conference coming, but uh, घनेंद्र भारद्वाज, आप कुछ कहना चाहते थे बीच में जब हम बात कर रहे थे केजरीवाल जी को, और जो इश्यूज है जो उन्होंने काम किए हैं, जैसे इकोनॉमी की ही बात करें तो इकोनॉमी के बड़े इश्यूज है आजकल, तो इससे अगर हम इमेज की बात करें तो इससे इकोनॉमी में बेहतरी आएगी बनिस्बत की उन इश्यूज पे बात करें जो इश्यूज इस वक्त मौजूद है, जैसे कि प्राइस राइज है, जैसे कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है रुपए के कंपैरिजन में, तो उन चीजों पे बात नहीं हो रही है। देखिए जफर जी, अगर आप, मैं वही कह रहा था कि अगर आप पूरा केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को अगर आप डीपली स्टडी करेंगे और आम आदमी पार्टी किन इश्यूज को लेके आए, किन इश्यूज को लेके हम देश पे जा रहे हैं, अगर आप पूरे इश्यूज को देखेंगे तो आज अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस देश के लिए एक मॉडल बन चुका है। देश की सरकारों को अरविंद केजरीवाल की सरकार से सीखना चाहिए। 2015 में जब हमारी सरकार आई थी तो दिल्ली की इकोनॉमी भी हमें ऐसी मिली थी। दिल्ली की इकोनॉमी भी उस समय 35,000 करोड़ रुपए की थी, जो आज 75,000 करोड़ रुपए है। और हमने सब कुछ फ्री कर दिया। हमारे ऑपोजिशन के, हमारे जितने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स है, हमारे ऊपर बार बार यही इल्जाम लगाते कि हमने बिजली फ्री कर दी, हमने पानी फ्री कर दिया, हमने महिलाओं की यात्रा फ्री कर दी, हमने बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री कर दी। हमने दिल्ली में सब कुछ फ्री करने के बाद भी हमने दिल्ली की इकोनॉमी को डबल कर दिया। ये केजरीवाल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स है। हमने मोदी जी को बार बार कहा है कि मोदी जी, आप भी अगर आपको लग रहा है कोई सरकार अच्छा काम कर रही है, आप हमसे चर्चा कीजिए, हमारे भी इनोवेटिव आइडिया लिए। देश, देखिए, देश नंबर 1 होना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी यही काम कर रही है कि देश को कैसे नंबर 1 बनाना है, और देश को नंबर 1 बनाने के लिए 130 करोड़ भारतीयों को एक साथ मिलकर हर इश्यूज पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं जैसे कह रहा था, गार्गी जी भी कह रही थी, गार्गी जी देखिए होता क्या है कि देखिए, अब मैं सुबह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी पूछ रहा हूँ, हम भी हमने बोला है कि भी अरविंद केजरीवाल जी ने एक केंद्र सरकार को सुझाव दिया, आप बताइए इस सुझाव के साथ है या खिलाफ है? अभी तक वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। अरविंद केजरीवाल का विरोध करते करते महालक्ष्मी जी और गणेश जी का विरोध करने लगे पूरा सुबह से भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं, उसमें, ये क्योंकि तो देखिए मैंने, पॉलिटिक्स है ना, देखिए, देखिए ये तो नहीं नहीं, पॉलिटिक्स है ना, देखिए, कि वो देखिए मैं वो जफर, सुझाव देते जो आप बोल रहे थे, जफर अभी जी, बता जफर रहे जी, थे कि जफर जी, जो चीजें हुई है, जफर जो जी, आपको लगता है काफी जफर जी, रिफॉर्म्स हुए हैं, तो वो जफर सुझाव जी, ना देते हैं? जफर जी, जफर जी, जफर जी, पिछले 6 साल से 7 साल से लगातार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार और अरविंद केजरीवाल जी, हम अपना गवर्नेंस मॉडल लेके जा रहे हैं। हम दिल्ली में हमने जो काम करा हम ओके, पंजाब में ओके, लेके गए, ठीक है। पंजाब के लोगों ने लेट एक्सेप्ट लेट करा। आज लेट गुजरात लेट के लोग भी कह रहे हैं, लेट गुजरात में, गार्गी रिस्पॉन्ड। मैं 30 सेकंड में एक जवाब दे दूं। हाँ, गुजरात में हम गए, हमने गुजरात में भी कहा है कि हर घर को 300 यूनिट बिजली मिलेगी, हर 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल बनाएंगे, हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक सेटअप करेंगे, हर महिला के खाते में 1,000 रुपए आएंगे। ये तमाम वायदे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने वहां पे करे। अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल वायदे नहीं करते, गारंटी देते हैं। हमारा ठीक पूरे का पूरा चुनाव जो है ठीक गवर्नेंस मॉडल पे हो रहा है। ठीक हम अपने गवर्नेंस की बातों को लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं। Okay, let Gargi respond. Gargi, you heard
the Aam Aadmi Party representative making a point. What do you have to say? Because it's showing muted. It is unmuted, right? I'm No, it's audible, okay. right? We can hear you. Yes, yes, we can Yeah, hear yeah. you. Okay, firstly, when you are talking about mohalla clinics and all, see the mohalla clinics in Delhi, they are not functional. It initially had started. Ask the people of Delhi. Arvind Kejriwal claims he has built 500 schools. Ask them to name the schools. Yes, some classrooms, and usme bhi bahut ghotala hai in the classrooms. In Punjab, they are not able to pay the salaries. In Delhi, it is good that the central government is paying the police and all. They're not able to pay the salaries. See, giving freebies can be a very good politics, but it is always a bad economy. Welfare schemes are different. When you are giving a Awas Yojana, gas, toilet, those are necessities. But my in-laws' house is in CR Park. Okay, Chittaranjan Park is quite okay. Well, why do you think, Zaffar ji, people of Kalka ji or Chittaranjan Park, they need free electricity or free water? No, they do not need it. So when you give freebies like this, what will you do? You will do corruption, na? And then the spend on the ads, more than 500 crore. Just in Punjab, kitna crores spent kiya. So what that happens? So they bring this kind of liquor policy. They have to get commission. Where will the money come from? Money will not come fall from tree, na. So when you are giving freebies on one side, on the other side you have to do corruption. Why are not they able to pay the salary in Punjab? So what is the model of governance? If it is so good, let them talk about that. It is not. So he wants to divert the issue. He wants to clean up his image that he's anti-Hindu, he's appeasing Muslim. And I think at the moment he's also trying to divert the issue from the pollution in Delhi. Last year Gopal Rai said if they come into power in Punjab, there will be no stubble burning. And see what is the AQI in Delhi now. So stubble burning has not stopped. So where has he kept his word? Has the stubble burning stopped? No. There is no mohalla clinic functional. So ask him. So inka naam Ghanendra ji, as I said, it can be very good populist politics. It is very bad economics to give freebies like this. So then he will do corruption. And you know what is happening. Everybody is going behind Okay, bars. let Where him is respond. Amanatullah Let him Khan? Where respond. is Satyendra Jain? Ganendra Bardawaj, quickly before I go to बस Sayendra. बस मैं सिर्फ फ्री बीज में आपको फर्क बता रहा हूँ कि मुफ्त की रेवड़ी और फ्री बीज किसको कहते हैं। जब किसी कॉर्पोरेट्स का आप 15 लाख करोड़ रुपए का आप कर्जा माफ कर देते हो, वेव ऑफ कर देते हो, ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी ने वेव ऑफ और कर्जा माफी एक ही बात है। 5 लाख करोड़ रुपए का आप कॉर्पोरेट का टैक्स माफ कर देते हो, वो मेरे हिसाब से वो मुफ्त की रेवड़ी फ्री बीज है। किसी गरीब आदमी को अच्छी शिक्षा देना, किसी गरीब आदमी का अच्छा इलाज करना, गरीब आदमी के घर तक बिजली पहुंचाना है, मेरे हिसाब से 75 साल में हो जानी चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स है, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, ये हमारे मौलिक अधिकार है। संविधान में ये हर व्यक्ति को अधिकार मिले। पहली बार वो कोई सरकार आई है जो गरीब के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कर रही है। निश्चित तौर पर हम इसके लिए कमिटेड है, हम करते रहेंगे। देखिए, और मैं फिर कह रहा हूं कि कॉर्पोरेट का जो कर्जा माफ होता है, कभी गार्गी जी उससे भी सवाल उठाओ कि उन कॉर्पोरेट का आप टैक्स माफ कर देते, उनका कर्जा माफ कर देते, वो आपका मेरा पैसा है, वो कोई घर से नहीं लेके आए, वो आपका मेरा बैंकों वाला पैसा उनको उठा के दे दिया जाता है, फिर उनका कर्जा माफ हो जाता है, सरकार अपनी इकोनॉमी से उसको बाहर निकाल देती है। ये दिक्कत है, इसको इसके खिलाफ खड़े हो। गरीब को अगर अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी मिल रही है तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मिलने दो। गरीब का फंडामेंटल राइट है। इस देश में गरीब आदमी को जीने का अधिकार है। ये देश दो कॉर्पोरेट का देश नहीं है, ये देश 130 करोड़ लोगों का देश है। That's a point you put across your points. And then Goj, isn't it ironical that Kejriwal made that statement with two photographs of Bhagat Singh and Ambedkar in the backdrop? Yes, of course. I was going through Twitter and somebody said that he found that maybe both these people are laughing at the comments Mr. Kejriwal has made. But it's also, I think, sir, it's also very significant to see in that entire press conference. If we listen, he made a statement ki, I'm not very good at Hindi, so I will translate it and say that every business man keeps idols of Ganesha and Laxmi ji at their place. But sir, as we understand that there is an entire community of suppose the Parsi community, they do not keep Lakshmi ji and Ganesha ji.
maybe the Muslim community in the old Delhi side, Daryaganj side, they don't keep it, right? So this statement, and today the politics is that, sir, what I understand is that BJP is not talking directly, is unable to comment on the issue of using Lakshmi ji and Ganesha ji's images, idols or pictures. They are talking about pollution, they are talking about corruption, fair enough. But here the entire thing, sir, is about saying that it is my Hindu line, and Exactly. somewhere, Yeah. sir, I also see that there is a problem, because there is a bit of hypocrisy there, sir, because we do not expect that uh, RSS will not take a Hindu line, right? That's we will not expect, right? But we will have that expectation, people will have that expectation from Mr. Kejriwal, right? No, That but he, isn't this a way of telling the BJP that they don't have a monopoly over playing the so-called quote unquote religion card, and he can beat them in their own game as far as electoral yes, politics is concerned? yes, of course, sir. So I think that it is a uh, competitive Hindutva, right? That who is a better Hindu? So Hmm. Arvind Kejriwal is saying, the problem is that he is saying मुझे politics राजनीति समझ में नहीं आता, and the next day he is saying put Lakshmi ji and Lakshmi Ganesha ji's picture on the note. ठीक है, अगर आपको पॉलिटिक्स समझ में नहीं आता तो आप ऐसे स्टेटमेंट कैसे कर रहे हैं? ठीक है, ऑफ कोर्स आपको पॉलिटिक्स समझ में आते हैं. सो ही इज जस्ट गिविंग द हिंदुत्व विथ द पैकेज ऑफ development of education and development of healthcare and other things. And he has not talked about Bilkis Bano's rapists, and the whole issue. When somebody asked Mr. Manish Sisodia in Gujarat that why are you not talking, why are you not making statement about it, he said कि मुझे हमें शिक्षा के ऊपर बात करना है, हमें स्वास्थ्य के ऊपर बात करना है. अगर शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर बात करना है, तो why put Ganesha ji's picture and Lakshmi ji's picture on Indian Right. currency? Right. That's Gargi the Nandi, issue. Gargi, will it eventually help in election? Will such statements help to sway the people in favor of Aam Aadmi Party? Do you think so? Or No, I people don't. will really care about real issues, which No, are I hurting them at the moment? Yes, I don't really think that it will help in election because people of Gujarat are smart. I have been going to Gujarat since 2007. They're very good businessmen and all. Yeah. Firstly, they will not fall prey to freebies. मुझे नहीं लगता है. And Hmm. secondly, they can see through the hypocrisy. When Shantun had rightly said, competitive politics of Hindutva. See, Yeah. BJP has an ideology. Sangh has an ideology. They believe in Hmm. Hinduism strong. So Hmm. people know, okay, they are genuinely believing it. Modi ji goes to the temples, so nobody will question. But when a person like Kejriwal does this just some months before elections, so one can see through that why he is doing that, because he has been accused of minority appeasement and also he is doing, so people can see through. So that's where the hypocrisy lies. But I think BJP also believes in sabka saath, sabka vikas, sabka vishwas. See, the welfare schemes went to everybody. If you see welfare schemes, there was no that whether the Pradhan Mantri Awas Yojana, whether the toilet, Ujala, it went to everybody, irrespective of caste, creed, or religion. That's why you have seen UP mein even Muslims have voted. Muslims, Dalits have voted for BJP. BJP would not have won. Abhi to Rampur and jo by-election hua tha, those were Muslim bastion. BJP won there. So why? So somewhere welfare schemes went to everybody. So you No, can but do good for Aam Aadmi everybody and Party, have the Aam Aadmi Party won in Punjab. Of course, that is also, that was a big achievement for Aam Aadmi Party, yeah, and it is an that achievement, happened quite sure. that happened quite recently. But last word to you, Ghanendra Bhardwaj, आपको क्या But लगता है इस 8 सबसे? seconds. Yeah. Please complete. But UP, yeah, but UP and Goa, what happened? UP, they got less vote than Nota.
Nota se bhi kam mila, and Goa also very bad. So what have they done in UP? And they were saying they will rule UP. They'll come to power in UP. So they've got lesser votes than Nota. So I don't think people in Gujarat, they are very intelligent people. They will not fall for this kind of hypocrisy. They can see through it. Why he's doing it. Yes, Okay. Ghanendra ji. Ganendra Bhardwaj, last word to जी you. जी हाँ, जफर जी हो क्या रहा है कि कई लोगों ने और कुछ एक विशेष आइडियोलॉजी ने, जैसे अभी गार्गी जी ने बोला कि उनको लगता है कि सिर्फ हिंदुत्व की बात भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस करेगी। मैं हिंदू हूँ, अरविंद केजरीवाल जी हिंदू हैं, अगर मैं मंदिर जाता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी मंदिर जाते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये धर्म तो आदमी का व्यक्ति का विशेष व्यक्तिगत अधिकार है, मैं अपने धर्म में आस्था रखता हूँ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मैं अपने धर्म में आस्था रख रहा हूं, मैं मंदिर जाता हूं तो बीजेपी वाले आरएसएस वालों के पेट में दर्द होता है। अरविंद केजरीवाल जी चुनाव में हनुमान मंदिर के हनुमान चालीसा पढ़ इनके पेट में दर्द हो गया। होता क्या है कि अरविंद केजरीवाल जी अगर मंदिर जाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि गणेश जी की, लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए करेंसी पे, इसमें कुछ गलत नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी को हमेशा ये उनके दिमाग में रहता है कि शायद हिंदुत्व उनका पेटेंट है, शायद मंदिर उनका पेटेंट है। अरे सबका अधिकार है, हर आदमी को जाने का अधिकार है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ गार्गी जी, मैं इसमें नहीं पढ़ रहा, ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी ने एक प्रस्ताव कर दिया है, ठीक है, सुबह से शाम तक भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता अरविंद केजरीवाल जी को गाली दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी को गाली दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का विरोध करते करते आज लक्ष्मी जी और गणेश जी के विरोध से आगे, ये गलत है, ये दुखद है। आपको ये बताना चाहिए कि आप अरविंद केजरीवाल जी की डिमांड के साथ हो या नहीं हो। आज भारतीय जनता पार्टी ऐसी जगह फंस गई है, ना तो वो साथ हो पा रही है, उल्टा ना खिलाफ हो पा रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने का काम सुबह से शाम तक इनका जारी है। Let Gargi quickly respond, and we'll also get a word from Sayantan before we end our show. Quickly, Gargi. See, we are not insulting Lakshmi ji and Ganesh. Lakshmi and Ganesh sit in our heart, and let them be there. We have faith in it, and you can have faith in that. Visit the temples. But our request is, don't play politics with that religion. Right. What Arvind Kejriwal does is, for votes, like a chameleon. When he needs, he wears a skull cap and throws a iftar party, and when he needs, he goes and chants Hanuman Chalisa. So you don't need to do that. If you really do work of development and all, then people will vote. If you are really doing good work, if you are doing a good work, why do you want to do such kind of gimmicks or stunts? You don't need this kind of stunts or gimmicks to win elections. Sayantan? Yes, so I have a question for Ganendra ji. Ganendra ji, जो बोला वो सही है कि वो हिंदू है और अरविंद जी हिंदू है, वो टेम्पल्स में जाते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? मुझे दिक्कत नहीं है, लाइक नोबडी शुड हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। बट अगर जैसे कि आप हिंदू हो, आप वो बोल रहे हैं, यू आर क्लेमिंग दैट यू आर अ हिंदू एंड यू आर प्राउड ऑफ इट। सो ऐसे मेरा भी हो सकता है कि मैं धर्म में विश्वास नहीं करता। गांधी जी डज नॉट रिप्रेजेंट एनी रिलीजन, he represents an ideology, he represents India as a whole. He so now if I do not want your ideological your idols, your religious idols in a note which I use, तो उसमें वो तो मेरा भी डिमांड हो सकता है ना। गांधी जी को देखना और ये तो अलग हो सकता है ना। Yes, they're saying that they just made a suggestion to the Prime Minister, and of course it is not so simple as we were discussing. But before we wrap up, I want to leave the audiences with those sound bites of Arvind Kejriwal and the reaction of the BJP that followed. If we can play up those sound bites. आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ
गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज़्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। Yes, the BJP response also. अरविंद केजरीवाल वो काल नेमी की तरह है, मुंह में राम बगल में छुरी। ऐसे में इनका विश्वास नहीं किया जा सकता ये क्या कह रहे हैं। अगर सही मायने में आप इस बात पे गंभीर हैं कि नोट के ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो आनी चाहिए, तो आपको तुरंत अपने मंत्री इमरान हुसैन से और अमानतुल्लाह खान अपने विधायक से इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी चाहिए, ताकि ये पता किया जा सके कहीं आप सिर्फ राजनीति तो नहीं कर रहे हैं इस पे। और दूसरी चीज, जो आपके मंत्री और आपके प्रदेश अध्यक्ष लगातार हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश सबके अस्तित्व पे ही प्रश्न उठाते हैं, उनको तुरंत आपको अपने पार्टी से सस्पेंड करना चाहिए। तब हम समझेंगे कि अरविंद केजरीवाल आप कहीं से इस प्रस्ताव पे सीरियस हैं। वैसे हमें पता है गुजरात में जो सर्वे हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी को 0 सीट आ रही है। इससे बौखलाए हुए आप कोई भी चुनावी स्टंट कर सकते हैं। That brings us to the end of our show. Thanks to all our panelists for joining us. That's all we have in today's show. Thanks for watching. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.